So today the new paper is starting, right? Good afternoon, Rohit. So today we are going to start the paper 2. ठीक है? Paper 2 में your unit is unit 1. ठीक है? क्या unit 1 आपकी? Cell biology. देखो आप लोग पेपर 1 रिवाइज करना, जिसने पूरा कवर कर लिया है, जिसने नहीं किया है, जो भी है, ठीक है? If there will be any doubt, that does not mean that if we are going to start the paper 2, we will not touch the paper 1. We will, okay? कोई भी सारी पीडीएफ अपलोड हो गई ना? कोई रह तो नहीं गई अभी? आई थी एक नाइट्रोजन बायोलॉजी केमिकल की साइकिल की रह गई है, दैट वाज अभी इसको कुछ और लोगों को करवाना, वो क्रिएट हो गई, ठीक है? शिवम सारी पीडीएफ? हाँ जी कुछ ओके ठीक है. Which one you prefer करो, ट्रायल एंड एरर लर्निंग और इनसाइड लर्निंग? ठीक है. तो एक्चुअली इनसाइड लर्निंग में क्या अपना मेमोरी यूज करता है, तो इसमें भी अपना मेमोरी यूज करता है. मेमोरी लर्निंग देखो, मेमोरी इज अगेन द टू टाइप. मेमोरी आपका जो उसमें हमने बुक में टेक करवाया, मेमोरी इज अगेन योर टू टाइप, डिफरेंट, क्योंकि ये आपकी किस टाइप की मेमोरी? इननेट बिहेवियर तो है नहीं, ये आपका लर्निंग बिहेवियर है. सो लर्निंग बिहेवियर कैन बी ऑफ द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन बी ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ट्रायल एंड एरर लर्निंग में क्या है, वो मल्टीपल स्टेप्स ट्राई कर रहा है, फिर उसके बाद भूल रहा है, फिर वो स्टेप ट्राई कर रहा है, फिर वो स्टेप भूल रहा है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप सपोज दैट आपके पास ये रैट है और आपने इस पर्टिकुलर केज में इसको मे बी आज के लिए रखा, आप मे बी 4 to 5 डेज के बाद लेके रख के आओगे, तो फिर ये एक ही बार में कर लेगा. बट इनसाइड में दिस इज अ हायर चांस कि वो रख लेता है. ट्रायल एंड रनिंग में ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अगेन क्या विश, हाँ तो ठीक है. अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म, इट्स जस्ट अ नॉर्मल बिहेवियर. जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन की अगर बात करो या मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन सिस्टम की बात करो, देन ट्रायल एंड एरर लर्निंग आल्सो विल बी द मोस्ट परमानेंट. ठीक है? इट इज जस्ट बिकॉज कि देखो जितनी भी टाइप के हमने बिहेवियर्स पढ़े हैं, उसमें डिपेंड कि किसी में आपका ये रिवॉर्ड दे रहा है, किसी में रिवॉर्ड नहीं दे रहा है. ट्रायल एंड एरर लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? डिपेंड, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो डिपेंड करता है क्या आप, एंड जैसे कि कंपेयर टू द your mice and dog are one of the most taken, or duck or also geese or duck also one of that most frequent example for that animal behavior. तो अगर आप माइस को इंक्लूड करा रहे हो, फिर आप डक को रख रहे हो, फिर आप डॉग को रख रहे हो, तो ये आपका डॉग विल बी हैव दैट मोर परमानेंट कंपेयर टू द अदर टू. ठीक है? So today we are going to talk about that cell biology paper 2. ठीक है? Cell biology में we'll start with the topic cell. थोड़ा सा हम लोग इवोल्यूशन करेंगे, इवोल्यूशन से टच करते हुए आगे चलेंगे. ठीक है? देखो व्हाट इज सेल, व्हाई वी आर सेइंग दैट सेल, व्हाट इज सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. शिवम, व्हाट इज सेल अदर देन दैट? इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन. शी हैज लेफ्ट द वर्ड्स टू कंप्लीट इट. व्हाट इज सेल? ओके विश्व, अदर देन दैट? Rohit, what is cell? What is cell? Structure and function unit of building blocks. Yes, good. But what it is, we are saying it life. Suppose that if we talk about what is life, why we are saying that life is relating with your living organism, isn't it? Life is relating with your living organism. On what basis you can say कि suppose that this particular podium is also made up of the kind of material जैसे कि wood, तो that particular wood also must have the some, क्योंकि एक टाइम पे तो लिविंग थी ही. अभी सपोज दैट मैं यहाँ की पर्टिकुलर स्क्रैच करूँ, यहाँ की पर्टिकुलर उसको मैं सेल बोल सकती हूँ? नो, व्हाई? दैट्स अ नॉन लिविंग. So tell me, what are the features of the living? When we call the feature, it's a living. Metabolic function कर सके, okay. What is metabolic function, Vishwa? No, ठीक है, just tell me. This is obviously discussion. मुझे भी तो पता चलना चाहिए. What is the metabolic? Metabolic is energy production. So if you'll burn it, will it not produce the energy? Burning of any physical form of, और ये अच्छा,
तो उसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो, दैट इज मीन्स एनर्जी। अदर देन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटाबॉलिक? जरूरी है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी प्रोड्यूस ही हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मेटाबॉलिक देन? ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। हाँ, मतलब बहुत ब्रॉडर टर्म है ये। बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, जस्ट ब्रेक दिस वर्ड, जस्ट ब्रेक इट। वेरी गुड, very very good. So that is your catabolism and anabolism. What are the function in your body that is your catabolism and anabolism? So many physiological reactions occurs in your body. What are the body reactions which are your catabolism and anabolism? Digestion is your catabolism or anabolism? So it's a catabolism, obviously. Then it will be the catabolism. Then anabolism is your absorption. नहीं, absorption आपका proper digestion, इसका full form ही होता है breaking down and absorption of the complex compound into the similar and absorbable form of nutrition. So that, yes, obviously respiration में आपके कितने processes आते हैं? How many steps in the respiration? 2. What are they? Not that one. No. What are the steps in the breathing? Biochemically level पे respiration में what are the steps? Second, ये सब आपके सिलेबस में है ना? Third, electron transport chain. That is your respiration, right? So, can we say that anabolism is something you are forming and catabolism something you are degrading it, right? So, how you can say respiration में form क्या कर रहे हो? Which type of reaction it will be considered when you are forming the energy? What it is called? The energy currency in your body is ATP, right? So you are forming the ATP. Which type of reaction is called? This is a prelims ka question. Reaction it is. Yes, very good. What it is? Respiration is exothermic. Pakka? Shiva? Obviously it's exothermic, na? This is the final step. If I'm saying that in the respiration, anabolism ka example respiration de rahe ho. Anabolism you are saying that A is equal to B and A is equal to C, then obviously B is equal to C, na? Right? So in that respiration you are forming the energy. So respiration में आप क्या करो? Energy form करो. But what it is then? So respiration is, as Shivam said, it's a exothermic reaction. What is the definition of exothermic reaction, Anushka? What is the endothermic and exothermic reactions? Okay. Or endothermic means? So cross question. So are you saying that in the exothermic reaction you are not utilizing energy? Exactly. The end product, or better we can say that exothermic reactions are those reactions in which obviously any kind of reaction, suppose that burning of coal or burning of anything is exothermic reaction. किसी भी चीज को जो आप burn करते हो, then it will be the exothermic reaction. But when we are saying that exothermic reaction, that means the amount of energy we are utilizing it to perform that particular kind of reaction, जो आपके जो भी आपके अभी इसमें आएगा बायोकेमिस्ट्री में, that is your activation energy. क्या होती है activation energy? Which will become lower in the presence of enzymes. What is the ये भी आपका prelims का question है. What is the function of enzyme? What is the main function of enzyme? Better say like that. To reduce the rate of reaction. What is the rate of reaction? So many, of course, इसमें ये अभी क्या है ना, पेपर 2 पूरा आपका कोरिलेट करेगा. पेपर 2 में कुछ भी छूटना नहीं है. आप सेल बायोलॉजी कवर, आपको मॉलिक्यूलर और साइटोलॉजी या जेनेटिक्स टच करनी. जैसे आप जेनेटिक्स टच करोगे पूरा एवोल्यूशन है.
सेल क्या स्टार्टिंग ही आपका एवोल्यूशन. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? What is rate of reaction? Rate, yes, but that is not the major function of the enzyme. ये स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स का है. व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द एंजाइम? और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकता है. व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ द एंजाइम? इनहिबिशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Obviously, I am going to talk every single thing about it in respective units, but still, that's a kind of discussion, right? What is activation energy, anyone? Activation energy is a required thing when you are converting any substrate, to the product, okay, to the product. So what will happen? Obviously you are going to invest, अगर ये reaction self नहीं है तो that means you are going to invest some amount of energy. ठीक है, you are going, जैसे कि आप सिंपल ऐसे कंसीडर करो 6CO2 plus 6H2 gives us C6H12O6. ठीक है, 6CO2 plus 6H2O gives out C6H12O6 plus 6O2. Then here the energy it is requiring, it is your sunlight. Sunlight is the only available form of energy in your ecosystem, right? Which is utilizing in breaking down of the substrate or the water molecule, isn't it? Chalo, ठीक है. So that means to perform any kind of, that is a substrate and that's a product. To perform any kind of chemical reaction, you require the energy to convert the substrate into product. तो इसका जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो ये होता है. यहाँ तक कि सबस्ट्रेट तक एक ऐसी स्टेज आएगी, दैट पर्टिकुलर स्टेज जहां पे पर्टिकुलर आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज द एक्टिवेशन. एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to convert substrate into that transition और very high energetical step जहां से उसके बाद उसकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. दैट इज योर सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट. समझ आया? एक्टिवेशन एनर्जी के बिना, विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी द एक्शन कैन नॉट बी. ठीक, ये वाले में सपोज दैट व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट देन मे बी द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज योर 60 कैलोरीज, सपोज दैट. ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एंजाइम लगा दिया. अभी सबस्ट्रेट क्या हो रहा था, जो भी रिएक्शन हो रहा था वो अपने आप एवरीथिंग इज डन बाय हिम, उसको अपना ब्रेकडाउन कंपाउंड को ब्रेक. जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो CO2 कैसे बना होगा, दिस इज योर CO2, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है. ठीक है, दिस इज योर OH. सपोज दैट एंजाइम नहीं तो ये आपस में with so many factors, temperature, pH and so many factors के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे, है ना, फिर ये एसिमिलेट कर रहे होंगे ग्लूकोज बनाने के लिए. ठीक है, अभी यहीं पे हम अगर इसको एक एंजाइम ले आए, एंजाइम को, व्हाट इज एंजाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम वी नो दैट, देखो हम लोग स्टार्ट सेल कर रहे हैं और पहुंच कर रहे हैं. एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, दे हैव द स्पेसिफिक कैटालिटिक साइट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग. अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर बाइंड कर लिया. अब इन्होंने ऐसा कुछ भी रोटेट या जो भी टर्नओवर करना था, देन इट बिकम. तो मेजर फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज lowering down the activation energy. That's how any particular chemical reaction or the biochemical reaction will become more favorable. In the start of this topic, this zoology, we start that every single reaction in your environment or the living body, कोई भी चीज कैसे परफॉर्म होती है, as lower as you are utilizing that energy, उतनी ही feasible आपकी रिएक्शन हो रही है. ठीक है, सो एंजाइम का सिंपली फंक्शन ये, एंजाइम नहीं करना है, करना हम लोगों को सेल है. ठीक है, तो सेल क्या होती है आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ऐसी जब सेल का इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले आपका so many scientists, Leeuwenhoek, Aristotle, so many scientists were there. तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आपकी होती है, एक तो आप जैसे कि विश्वास ने बताया मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एनर्जी. चलो ठीक है, सेकंड
Yes, not the growth. How? Justify that. This is a non-living. Podium is a non-living, right? It is not performing the metabolic activities. How can you say that this is showing the growth? Is it showing the growth? Dirt ke deposition se, then that's a another factor you are adding on it, not the primary one. It's a secondary one of growth. What? How you can say the podium is growing? Like suppose दो हटा दो इसको इसको किसी और environment में रख देते हैं. Garbage. एनर्जी से एक्सपेंशन भी होता है. Energy से expansion. How? Which form of energy? हीट से एक्सपेंशन होता Yes. जैसे कि है. yes. हीट से नहीं होता है, वाटर से होता है. वाटर हीट से भी होता है. दैट वाज सो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हीट देते हैं. ओके ओके ठीक है हाँ एग्जैक्टली अब इसी सपोज दैट अभी दिस इज अ नॉन लिविंग दिस इज नॉट ग्रोइंग बट यू इफ यू कीप इट इन द मॉइस्चर in the outside of the training or the precipitation area you will see what is the growth. First of all, growth is simple increasing in the size. Suppose that this particular size of the podium may be some of the centimeter, maybe 8 to 10 centimeters. Okay, what happened if you keep it into the water? It will show that 10 to 15 centimeters because इसको आप growth बोल रहे हो. So growth is a your living and non living both characters but not the reproduction. तो second आपका होगा इसमें क्या होगा reproduction. ठीक है उसके बाद locomotion तो not at all. Trees cannot move and they are the living one. Locomotion and नहीं. There's a very what is the one characteristic that was the core of all of the phylum? Now you guys tell me. सेंसरी ऑर्गन को और कॉन्शियसनेस. ठीक है कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ दैट. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फीचर ऑफ कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो आप उसमें कॉन्शियसनेस नहीं डाल सकते. ठीक है सो कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है चलो तो जब सबसे पहले सेल बनी तो सेल में सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले इवोल्यूशन आपका कहाँ हुआ था. द फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेटेड इन विच टाइप ऑफ वाटर. मराइन और द सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर था भी उस समय या था ही नहीं या था लेकिन उसमें बना नहीं था. What is the difference between which was the marine water and the fresh water? Okay, and other than the salinity? And location, geographical location. The marine water it is oceans, salt, है ना generally. So this is your Pangea and Panthalassa. What is Pangea? Land part. Unified land. What is Panthalassa? Oceanic or the water part. Pangea broken down. So initially can we say that Indian Ocean, आपका Atlantic Ocean, Pacific Ocean was continuous, right? Which theory? Good. Continental drift theory. What happened in the continental drift theory? Why the continental drift theory was accepted? No, it's a continental drift theory is the accepted one, which was accepted theory of the breaking down of the Pangea. And why? There's three theories. What are the three theories? Let's just leave it. Rohit, tell me the theory which was accepted for the breaking down of the Pangea. देखिए जीएस की प्रिपरेशन कहाँ चल रही है. कोई बात नहीं. Why the continental drift theory was not accepted? Because of that other theory was accepted. आपका इवोल्यूशन में क्वेश्चन आया हुआ है. I'll show that PYQ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्या क्या एक्सेप्टेंस हैं. सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ. ये इवोल्यूशन का प्रॉपर टॉपिक है आपका. ठीक है व्हाट वाज द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल. ओके गुड. व्हाट वाज द एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. व्हाई द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज एक्सेप्टेड. पजल ऑफ जिगसॉ फिट. यस सेकंड द मल्टीपल पॉइंट्स ना प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. एग्जांपल just tell me the where were the biological fossils were present.
North America. Yes, obviously. This is a portion of Britain. This is the North America. और glaciation deposits. और क्या बोलते हैं उसको? What is the term which has been used in your paper? UPSC ने उसको proper use किया है. This is a very good example of that. Glaciation नहीं, but that's a kind of deposition. Yes. What is the glacier deposit and उसका? And it found in? South America and Africa. Yes. वहां पे दोनों पे आपकी गोल्ड डिपोजिशन था. और आपके इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में जो आप लोग इसको प्रूव करके लिखोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फ्रॉम योर जियोलॉजी प्रोस्पेक्ट. यस, एनिमल स्पीसीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और आपका ब्रिटेन. ठीक है. when they are so what was the reason? अभी सब जैसे कि you guys have said that yes Rohit jigsaw fit and that proof like that. Yeah, good. So suppose that if you are saying that, तो पहले that means Pangaea was a combined form of the land. What तो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो प्रपोजल थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो आपके प्रपोजल थे, yes they said that कि जो उसने प्रूफ दिए वो सारे प्रूफ हो रहे थे. But what was the reason to break down of the Pangaea? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या बोला था? That was that limitation of it. क्या बोला था? कौन सा फोर्स? इसलिए सिंपल इतना बोला, कॉन्टिनेंटल जैसे ने इतना बोला बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दैट सो कॉन्टिनेंट मूव लाइक दैट. आर यू सीरियस? और तो अभी भी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवोल्यूट कर रही है, अभी क्यों नहीं मूव हो रहे? राइट. तो इसीलिए दैट वाज इट्स लिमिटेशन. इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. इट्स थ्योरी जो थी उसकी वो एक्सेप्ट करी गई थी बट रीजन जस्टिफाई नहीं कर पाए. चलो नेक्स्ट थ्योरी वाज, okay tell me the most accepted theory was and why it was accepted. अच्छा अभी याद आ गया. चलो tell me the, कोई बात नहीं, that's good ना, that we are doing that mind का ना. What was the reason? What reason this theory gave to breakdown of the Pangaea? What is the theory called? What is that word called? Shivam? Asthenosphere is the position of magma. But what is the theory? It is what was the word? What is the convection? Shivam बताएगा. Shivam, what is convection? What is the radiation, convection and conduction? Now tell me. इतना frustration. चलो एग्जाम्पल ही बताओ. This is a burner. This is a kettle. Here is the water. ठीक है. This is your handle. Here Shivam. ठीक है. चलो बताओ. The water is getting heated because of because of heat. Conduction. Rohit, am I visible and audible too? Okay, fine. Thank you. So yeah, the one is conduction, second one is convection, and third one is radiation. Yes, tell me. So this water is getting heated up because of convection. ठीक है? So convection is occurred. फिर ये आपका जो आपकी heat है. So the heat source is this is your heat source, right? But why this is getting heated up? Because of the conduction. Radiation आपका environment में होता है, ठीक है? And Shivam is here, but the room is getting filled hot. So that is your radiation. So this is the
मेथड ऑफ दैट हीट ट्रांसफर इन द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। सो जो आपका कंडक्शन होता है, ठीक है, ये किसमें होता है आपका सॉलिड्स में। व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सॉलिड? दे आर वेरी 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 डेंसली पैक्ड। So when heat is transferred, the particle or that atoms of that particular matter do not move, ठीक है, that is your conduction, ठीक है, इसीलिए environment में आपका conduction नहीं होता है, ठीक है। Then we talk about the convection, जो कि आपका किसमें होता है, liquids में होता है, but आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो इसको, तो आप इसको liquid because of the water cycle also occurs through there, although वहां पे भी moisture content ही है, but generally we take that liquid maximum में आपका liquid में होता है, but थोड़ा थोड़ा आपका gases में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ के पार्टिकल, दिस इज अ हीट सोर्स, सो जो सबसे नीचे का पार्टिकल थे वहां ये क्या हो गए, पहले हीट हो गए, सो एज इट बिकम हीट दे बिकम लाइटर, सो दे विल गो अप, और यहाँ के पार्टिकल कैसे कोल्ड है, सो दे विल बिकम डाउन। सो ग्रेजुअली क्या होता है, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स मूव, कन्वेक्शन में आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट इज व्हाई कंडक्शन इज वेरी स्पेसिफिक, while the convection and radiation can use a little bit energy, ठीक है। रेडिएशन इज यहाँ पे तो फिर भी चलो ठीक है, हीट सोर्स से कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है, बट शिवम इज सिटिंग हियर, स्टिल ही इज फीलिंग दैट हॉट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो कैन वी से दैट रेडिएशन में आपकी गैसेस की जो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज वेरी हाई, ठीक है, समझ आ गया, ये भूलना नहीं है, हमेशा ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है शिवम। रेडिएशन डज नॉट इवन नीड एनी मीडियम, दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा रेडिएशन बढ़ रहा है, जैसे कि यूवी रेडिएशन इन योर environment है ना, we cannot say the UV radiation in the rock, got it, because that's a gaseous ना, हमारे सराउंडिंग क्या है, गैस है, ठीक है, so that is your concept, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाँ, तो पहली लाइफ आपकी कहाँ बनी थी, मरीन में, क्यों, यहाँ पे यहाँ तक एट दैट कंडीशन ऑफ द टाइम, तो वी हैव दैट आपका अगेन स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, जो आपका इवोल्यूशन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, व्हाट इज द स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, अबाउट दैट प्रूफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑरिजिन, है ना, स्टैनले मिलर आपका बायोकेमिकल लाइफ ऑफ प्रूफ ऑफ ऑरिजिन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है प्रॉपर, आई शो दैट इवोल्यूशन के टॉपिक में, what Stanley Miller has proved that first life has been originated in that marine water, he created that kind of environment in the lab, the first thing he proved that, and second thing what he proved that initially oxygen was not present, ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जब आपका लाइफ, जब आपकी अर्थ फॉर्म हुई थी, तो ऑक्सीजन आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल थी, हाइड्रोजन थी, यस, मीथेन थी, यस, नाइट्रोजन थी, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी, अमोनिया फॉर्म में थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में थी, दैट मींस कैन वी से दैट बट लाइफ ऑरिजिन हैज बीन स्टार्टेड, दैट मींस फ्रॉम हियर वी से दैट जो आपकी फर्स्ट सेल बनी थी या फिर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका जो बना था, दैट वाज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, समझ आया क्यों छोटे टॉपिक हमने डिस्कस करे, ऑल ऑफ द लिविंग, आज भी हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के लोग, कौन, टुडे एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पायर इन दैट एनारोबिक कंडीशन, yeast, bacteria baba, so many bacteria, majorly they are called the archaebacteria, ठीक है, so life has been started from there, इसीलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए that what are the characteristics of life, life की characteristics जो reproduction कर सके, जिनमें consciousness हो, so that they can respond to accordingly change in that environment, ठीक है। देखो सबसे पहले जो आपकी सेल बनी थी, सबसे पहले लिविंग फॉर्म जो बनी थी, वो आपकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल बनी थी, so what do you think, what is the basic thing required to form a life, क्या क्या जरूरत है, जेनेटिक मटेरियल, वेरी गुड, चलो जेनेटिक मटेरियल बना देते हैं, और एनर्जी फॉर्मुलेशन, ठीक है, एनर्जी फॉर्मुलेशन किससे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा यहाँ पे, एटीपी तो बनेगा, वो डिफरेंट है, व्हाट इज, ये सेल खुद किससे बनी है, व्हाट डू यू थिंक, ये सेल पर्टिकुलरली व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, प्रोटीन, दैट इज वाई इसमें क्या था, राइबोसोम, समझ आ गया, because ribosome is involved in the protein formation and today even we say that proteins are the building block of the cell, समझ आया, so जो सबसे पहले आपकी सेल बनी थी, and any so consider the viruses, what are the viruses, what are the viruses,
They become living. Good. But what are the structure of the viruses? क्या होता है? Good afternoon, Sumit. क्या होता है? What is the difference between the virus, viroid? Now tell me, and the prions के साथ में ही पढ़ते हैं ना हम? What is the difference between all these three? Rohit, what is the difference between all these three? Structure. What is the difference? Viruses are outer proteinaceous coat, capsid, as you said. Any viruses have that outer proteinaceous coat and inner genetic material. That is your DNA and RNA can be both. है ना? Viruses are actually properly four class, double based, double DNA, double single stranded DNA, double stranded RNA, and single RNA. अभी कुछ हो तो गया था बीच में. ठीक है. So on the basis of that, viruses are four types. What is the difference between the viroid and the viruses? They do not have that outer protein coating, but they do have that genetic material. Then what is prion? They do not have that genetic material, but they do have that outer prion, outer coating. What? So these are called the disease organism. इनमें से कोई भी आपका beneficial नहीं है, obviously, है ना? So these are called the disease causing organism. अब मैम आप ये बताओ, अगर genetic material नहीं है, what is the significance of the genetic material? What is the genetic material actually, first of all? The genetic material? बताओ भाई, बताना है ना अनुष्का. What is the genetic material? Genetic means something which is transferring. Griffith का experiment है ना? To prove that your DNA is a genetic material. What is the meaning of the genetic material? That is something definitely is transferring from this particular cell to this particular cell, or better say in more evolved form, the genetic material is a material which is transferring from one generation to the next generation. Monkey का baby monkey हो रहा है ना? अगर genetic material में कोई change आएगा, then we talk about this evolution, है ना? We talk about the species, we talk about the so many things. But what is overall genetic? Human का baby human ही है ना? If the human do not have that, tail, the human baby do not have the tail. If we do not have that, straight ear, so human baby do not have the straight ear. Why? Because that particular information of the human is carrying forward to the next generation, है ना? Because it is a much more stable compared to the RNA. ठीक है? That means सभी prion को अभी हम लोग जब पढ़ेंगे transcription, so prions are that misfolded protein. We can say that, yes, we can say that. ठीक है? These are also जब genetic material है तो how can you say that living? That is why they are the called that disease causing bacteria, sorry, disease causing pathogen, the disease causing organism. ठीक है? इसीलिए prion से most of जो diseases होती हैं वो आपकी misfolded, वो फिर prion में अगर genetic material नहीं बचा तो बचा क्या फिर? Outer protein coating. वही तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जब ट्रांसलेशन के बाद हम लोग प्रोटीन बनाते हैं, सो वी टॉक अबाउट दैट अल्फा बीटा, है ना? अल्फा शीट बीटा आपके प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना, प्राइमरी, क्वाटरनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शियरी. दैट मींस सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है? अल्जाइमर एक्चुअली आपकी डिजीज है, वो आपकी मिसफोल्डेड प्रोटीन से होती है आपके ब्रेन में. ठीक है? पर्सन के ब्रेन में. व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. ठीक है? प्रोटीन क्या है आपकी? देयर इज अ 2 अल्फा चेन व्हिच आर मेड अप ऑफ 141 amino acid and 2 beta chain which are made up of 146 amino acid each. ठीक है? अब ट्रांसलेशन के बाद क्या बना था? ये स्ट्रेट ट्रांसलेशन क्या होता है? अमाइनो एसिड्स आपके जेनेटिक कोडॉन्स पे आके अटैच होते चले जाते हैं एंड दे आर कनेक्टिंग बाइंडिंग टू दैट बॉन्ड, आपके पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं. तो वो जब आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ निकलती है. उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, chaperones. What is the chaperones? Anyone have idea? Chaperones are the proper component जिसमें है कि आपकी सपोज हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा ना, through which it will have the space to bind with that oxygen and CO2, है कि नहीं? अगर सपोज आपका ये पर्टिकुलर सपोज इसका ये स्ट्रक्चर है लाइक दिस, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें आपकी अल्फा ऐसे अटैच हो रही है, 2 अल्फा चेन आपकी ऐसे अटैच हो रही है और बीटा चेन आपकी ऐसे अटैच है.
सो सपोज दैट ऑक्सीजन जब बाइंड हो रहा है, so binding of oxygen is chemical reaction. That particular will going to bind with some kind of iron. उसी से बाइंड होता होगा ना, हीमोग्लोबिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स ये जो आपकी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स बनी है, इनके पास एक फंक्शनल यूनिट होनी चाहिए थ्रू विच वो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके. दैट प्रोसेस अकर इन द chaperones. दैट इज कॉल्ड द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स. ट्रांसलेशन के बाद एक प्रॉपर रिएक्शन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स. अगर वो नहीं होती है तो आपकी मिसफोल्डेड और अनफोल्डेड प्रोटीन्स जो है, सपोज दैट हीमोग्लोबिन ऐसे फॉर्म में नहीं बनी, वो ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड नहीं कर पा रही है, डू यू थिंक उसका कोई भी फंक्शन बचा आपकी बॉडी में? नो. सो इट विल ग्रेजुअली जस्ट एक्यूमुलेट समवेयर एल्स. जनरली ये चीज आपकी, वैसे तो ब्लड प्रॉपर्ली होता है, ब्रेन में होती है. सो ब्रेन में जितनी भी आपके ऐसी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की डिजीज है, जैसे कि अल्जाइमर, वो आपकी ब्रेन में. तो प्रायॉन्स आर एक्चुअली द मिसफोल्डेड प्रोटीन. प्रोटीन ही तो है, जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं. ठीक है, चलो. तो सेल आपकी जो सिंपल बनी, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल था. और राइबोसोम से, दैट इज व्हाई राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल which are present in that even the prokaryotic cell. ठीक है, as the evolution was occurring, as the evolution external environment was changing, अभी क्या हुआ, इस प्रोबैक्टीरिया, इस प्रोकैरियोट सेल को थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होने लगा. ठीक है, ऑल्दो इसमें बहुत सारे टाइप के थे. तब इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सेल में और भी इवोल्यूशन है, बिकॉज दिस जेनेटिक मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू डू, यू कवर इट, राइट? यू कवर इट. सो यू कवर्ड इट and you called it nucleus. So that is the difference between वो, जब हम लोग आरएच विटेकर का 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, so we talk about that nucleus. ऐसा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं that what is the difference between the prokaryote and the eukaryote, that double membrane bound cell organelle do not found in that prokaryote. That is one of the basic difference, right? Why basic actually हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं. ठीक है, अभी न्यूक्लियस क्या हो गया, ज्यादा सस्टेनेबल हो गया. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल. अब that because of the evolution was changing, so many specifications were there. अब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो गई थी, इसलिए अब आपकी बॉडी में क्या बनना शुरू हो गए, माइटोकॉन्ड्रियास. ठीक है, अब मोर स्पेसिफिसिटी चाहिए तो अभी आपका क्या बनना शुरू हो गए, ईआर. ईआर के साथ आपने क्या बनाना शुरू कर दिया, गोल्जी बॉडीज. क्योंकि आप देख रहे थे कि प्रायॉन्स बन रहे थे, वो मिसफोल्डेड थे और वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. तब हमने क्या किया, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स किसमें होती है, आपकी गोल्जी बॉडीज में होती है, ईआर में और गोल्जी बॉडीज में. ठीक है, फिर आपने क्या देखा, अच्छा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से पहले फिर आपने क्या बनाया, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट बनाया, फिर लाइसोसोम बनाया, मतलब वेरी स्पेसिफिकेशन, बट स्टिल इट वाज यूनिसेलुलर because it particular cell has to respond according to the changing of that evolution. तब हमने इसको क्या बोल दिया, eukaryotes, and that is called your protista. ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, prokaryotes, जो कि आपके क्या थे, बैक्टीरिया. ऑल द बैक्टीरिया comes in the prokaryotes, all. विश्व, हाँ, ऑल द बैक्टीरिया. सो पहला आपका होता है, अच्छा चलो इसको बेटर ऐसे करते हैं. आरएच विटेकर में आपका, आरएच विटेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पोर्शन आल्सो. सो पहला आपका जो सेल था, 5 यूनिट में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया. सो आई एम सेइंग दैट मोनेरा आर द प्रोकैरियोट्स. ठीक, जिसकी इस टाइप की सेल थी, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक द डबल मेम्ब्रेन सेल. उनके पास यही दो चीज थी, जेनेटिक मटेरियल था, राइबोसोम था, वाटर सेल वॉल थी, म्यूकोपेप्टाइड, दैट्स इट. ठीक है, सो आई एम सेइंग दैट प्रोकैरियोट्स जनरली आपके बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना दोनों सब लोग. ऑल द बैक्टीरियाज comes under the monera. लिख दूं, all the prokaryotes come under the monera, that's obvious. उसी की बेसिस पे तो उनको डिफरेंशिएट किया गया. आंसर में यस, रोहित आंसर इट, इट्स अ ट्रू और फॉल्स. भाई आंसर देना है, ज्यादा गलत ही होगा. कभी चाय अच्छी देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, कभी अच्छी नहीं देते तो वो गर्म ही रहती है. चलो बताओ, अनुष्का आंसर मी, फॉल्स. विश्व आंसर ट्रू. नो, यू हैव टू, देयर इज नॉट द ऑप्शन टू लीव. ये क्वेश्चन नंबर 1 है.
स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, मैंडेटरी होता है ना क्वेश्चन नंबर 1। यस श्योर। रोहित 50-50 चल रहा है यहाँ पे तो। व्हाई फॉल्स अनुष्का, क्या सोचा था? साइनोबैक्टीरियस है ना, ये सोचा था ना, साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एलगी, बट दे आर बैक्टीरिया. So when you see single cell of the cyanobacteria, you will not find any cell organelle except your genetic material and this. उनके पास स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, they do have that specificity, but they are, इस पे तो यूपीएससी ने बहुत बार गेम खेला है, अभी तक तो इतना गेम खेला है कि वेटरन्स को याद हो चुका है, इसलिए यूपीएससी ने देना छोड़ दिया है, ठीक है. बट साइनोबैक्टीरियाज are commonly called as a blue green algae because they show what is the algae. Algae is your plant. When we divide that into that 5 kingdom, we put the algae into the plant, ठीक है. So what is the specificity of the plant जो सब में नहीं है, सिर्फ उसमें है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है. मतलब ऐसा भी नहीं कह रही कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरियाज नहीं करते, बैक्टीरियाज आल्सो डू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट नॉट ऑल द बैक्टीरिया, बट ऑल द प्लांट्स डू दैट ऑटोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन, इवन योर insectivorous too. Insectivorous are the autotrophic or not? How? You should just keep quiet. How? But they to feed on insects, no? Then how they become the autotrophic? Viswa? Insectivorous are autotrophic or heterotrophic? Autotrophic or both? Autotrophic. Okay. Rohit, what is the example of the insectivorous? There's so many examples. Bladder wart, pitcher wart, Venus flytrap, so many examples, right? So yes, insectivorous are autotrophic, heterotrophic, or both. What is the condition? Why they feed on, why they are insecti means insects, vorous मतलब feeder, vorous का means होता है feeder of, yes, so they are both, है ना. heterotrophic मतलब they are, जैसे कि heterotrophic मतलब मेजर वो autotrophic ही होते हैं because they are the plants. जैसे कि आपके I have told this example with the help of the mangrove. mangrove में क्या होता है आपके, what is the respiratory roots, they come outside of that surface of the earth and they do have that rhizopores. Rhizopores do that because the oxygen concentration, because they generally grow in that swampy areas, है ना, that is very thick, so oxygen cannot penetrate deep down into there, so that is why they come out of the surface and they do have that rhizopores, and after that they just do respire. But that does not mean कि उनकी वो roots नहीं है, वो फिर भी roots ही ना, because वहां पे किस चीज की lack थी, ऑक्सीजन की. इंसेक्टिवर्स में किस चीज की प्रॉब्लम होती है, नाइट्रोजन की, है ना. तो ये जनरली आपने देखा दिल्ली में इंसेक्टिवर्स ग्रो होते हुए? वी हैवंट सीन दैट. हमने यूपी में देखा है? नहीं. सो इंसेक्टिवर्स जनरली ग्रो इन दैट एरियाज जहां की जो सॉइल होती है या ओवरऑल वहां पे बहुत ज्यादा लैक ऑफ डेफिशिएंसी होती है, किसकी? तो क्या हो जाएगा अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो? सर्वाइव कर ले विदाउट नाइट्रोजन की क्या प्रॉब्लम है? क्यों इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन? क्यों इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन? आपकी बॉडी में नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरी छोटे छोटे से क्वेश्चन. व्हाई इंपॉर्टेंट? नाइट्रोजन हाउ? एन देते हैं. That's the ion balance. No, that's not. वो भी इसमें ग्लूकोज की परसेंटेज कम हो जाती है. So ion channels give so that ATP regularize. आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है, so अदर जो कंपोनेंट है आपके वो ब्रेक डाउन होकर शुरू होना शुरू कर दें और आपकी बॉडी को एनर्जी मिले. That's the concept. वो नहीं, वो Na सोडियम है. It's a very basic question, guys. Why nitrogen is important? Why insectivorous feed on? Why if they're deficient? किसकी जरूरत है? हाउ? हीमोग्लोबिन में? फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन चाहिए होगा. अच्छा अनुष्का, आप भी कुछ ऐसे ही अच्छा सा एग्जांपल दो. गाइस आर यू सीरियस? आर यू श्योरली सीरियस? अभी आप हाँ किसके? फोटोसिंथेसिस.
कहाँ यूज हो रहा था अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन? जरा दिखाना मुझे आप सब लोग, किधर यूज हुआ नाइट्रोजन? मुझे तो नहीं दिखा। तो क्यों लेते हैं? एग्जैक्टली क्यों लेते हैं? बट दिस इज अ बेसिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना, व्हाई वी नीड टू टेक द नाइट्रोजन, दैट व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाई? बताओ। यस, गुड, गो ऑन। मेजर फंक्शन जैसे? क्या है आपके मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स? 12th का सिलेबस है। What is the biomacromolecules? Which are the basic element of your body. आप कोई भी चीज खाते हो, यही तीन जो चीजें हैं। एंड दीज ऑल जब हम लोग बोलते हैं दैट योर डिकम्पोजर्स और डिग्रेडेटर्स जो है, दैट आर एक्चुअली फीडिंग ऑन दैट ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में यही तो आप कंसिडर करते हो। एवरीथिंग दैट इज कार्बोहाइड्रेट, टेल मी एनी कार्बोहाइड्रेट नेम। ग्लूकोज, starch, any normal or polymer? So it is made up of C6H12O6 CHO. Lipid, palmitic acid, है ना? It's a long chain of fatty acids. CH C double OH. It's again CHO. ठीक है? Now tell me the nucleic acid. Nucleic acid is made. अभी चलो प्रोटीन बताते हैं। Proteins are the, अभी तो शायद समझ आ जाना चाहिए। Proteins are the polymer of nitrogen, amino acids. Or what is the formula of amino acids, guys? That is the basic formula of amino acids. What it is here? Nitrogen. इसलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। Exactly, you are going correctly, but you have to connect the major component. It is your protein. Protein is a building block of your element. If you will not take the nitrogen, obviously you cannot make any protein. किसी भी amino acid में this is the constant, है ना? आपका कोई भी amino acid का नाम लो, valine, serine, threonine, any kind of amino acid, just it is the changing. R is the changing. That what is called the chiral atoms, है ना? इसके चारों जनरली जो अलग होते हैं, ठीक है? So nitrogen is important बाबा the protein के लिए। किसी भी लिविंग बॉडी में आपकी प्रोटीन्स तो होंगी, so that is why nitrogen is important. हमारी बॉडी में भी यस, that's a secondary thing ना विश्वा। आपकी नाइट्रोजन अगर सपोज नहीं होगी, आपका जो अच्छा चलो आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हो, हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन इज, है ना? वो तो बाइंड करेगी, वो तो उसका फंक्शन है ना विश्वा। बट आपकी बॉडी में प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है ना? प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है। कोई भी चीज आपकी अगर प्रोटीन की बनी है तो ऑब्वियसली इट मस्ट हैव द, कोई भी अमाइनो एसिड बिना नाइट्रोजन के हो सकता है। दिस अमाइनो एसिड का नाम ही क्या है? अमाइन ग्रुप एंड एसिड ग्रुप, दैट इज अमाइनो एसिड। That's how we covered ना। इसीलिए तो हम लोग what we do, we just break the words. Now do we understand that why this और फिर न्यूक्लिक एसिड आपका DNA and RNA। इवन न्यूक्लिक एसिड भी जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड यू मेड अप ऑफ sugar, that is a phosphate sugar, then nitrogenous bases guys, nitrogenous bases plus आपका phosphate, इसीलिए phosphate important है आपकी बॉडी में। So except your CHO, there's a three more thing, that is N, P and S। इसको आप लोग किसमें कवर करते हो? बायोजी केमिकल साइकिल कवर करके आए हो ना इकोलॉजी में। बायोजी केमिकल में साइकिल ये आपकी कैसे आती है? गैसियस साइकिल। फॉस्फोरस एंड सल्फर इज योर सेडिमेंट्री साइकिल, है ना? क्यों जरूरत है? देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना? आप किसी भी चीज, यस यार, सो गुड, सो सॉरी रोहित, इज एग्जैक्टली प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड्स, ठीक है? सो दैट मींस आप और भी सारी चीजों को न्यूट्रिशन कर दो, बट दैट पर्टिकुलर सपोज दैट वी टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम, yes, calcium is important, but nitrogen, phosphorus and sulfur, these are the basic thing। अगर suppose that ऐसे बहुत सारे living organism हैं जिनमें calcium is not even required, है ना? बोन्स तो हमारे में पाई जा रही है, जो आपकी suppose that
सपोज दैट आपको इकानोडर्मेटा है या मोलस्कास हैं या कोई भी है, मान लो अर्थवर्म इज अ लिविंग, इट्स अ प्रॉपर कॉम्प्लिकेटेड सेल टाइप, है ना, प्रॉपर उसमें डेवलप ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है. डू दे हैव द कैल्शियम? No. But do they have nitrogen? Yes. They must have the protein, right? They must have the nucleic acid. So the nucleic acid is made up of the N, P, and S. So many proteins. Sulfur is important when we talk about the autotrophic nutrition. We talk about the autotrophic with two types: photoautotrophic and chemoautotrophic. So when we talk about the photoautotrophic, that is the presence of the sunlight. But when we talk about the chemoautotrophic, that is in the presence of that specifically sulfur bacteria that they called as a thiobacillus. Sulfur word is always, sulfur was indicating with the terminology that is called thioprotein, thiobacteria, thiosulfur. समझ आया? Thio group is going giving to the term the cell. समझ आ गया? So यहाँ पे we were talking about the cell आपका more complicate हो गई तो आपकी यूकेरियोट बन गई, that is a protista. अब यूकेरियोट बन गई तो और कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो ये सेलुलर क्या हो गए और कॉम्प्लेक्स होते चले गए, है ना. इसको हमने क्या बोला? मल्टी सेलुलैरिटी और टिश्यूज. व्हाट इज टिश्यूज? यस, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन. ठीक है, हमेशा जो स्टेटमेंट है, आप लोग जूलॉजी, आप लोग बायो बैकग्राउंड से, ग्रुप आर द सॉरी टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज का मसल्स, एक बहुत बेसिक मसल्स में अगर आप बोलोगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा एपिथेलियल टिश्यूज एंड ऑल. ठीक है, ब्लड, ब्लड इज योर टिश्यू, कंप्लीट ब्लड इज अ ऑर्गन. ठीक है, कैसे? ब्लड में आपकी क्या है? आरबीसीज भी हैं और जब सपोज है आरबीसी लेते, आरबीसी इज योर रेड ब्लड. ठीक है, अगर उसको आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी तब कंप्लीट होगा तब वो ऑर्गन बन जाएगा. मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टिश्यूज. अब सारी ही जो आरबीसी वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस और एक्सचेंजर ऑफ आयन, समथिंग लाइक दैट. डब्ल्यूबीसी इज परफॉर्मिंग सिमिलर काइंड ऑफ. तो ब्लड को आप टिश्यू में भी लेते हो, ब्लड को आप ऑर्गन में भी लेते हो. जैसे कि स्किन को आप ऑर्गन में लेते हो, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. समझ आ गया? बट स्किन की जो आप एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हो, जैसे कि सपोज दैट दिस इज योर हैंड, तो हैंड का जो सबसे अपर वाला होगा व्हिच दैट इट विल बी कॉल्ड दैट एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एपिथेलियल, यहाँ पे आपकी एरियोलर टिश्यूज हैं या जो भी टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, तो इसके नीचे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है. कोई प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है, कोई कवरिंग में हेल्प कर रही है, देन समवन इज अब्जॉर्प्शन, देन समवन हैविंग दैट ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेल. ठीक है, सेल मल्टीप्लाई हो गए, ये आपका इवोल्यूशन है. When we talk about that RS vertical system, we do not talk about the Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. Fungi की जब बात करते हैं तो complexity of the fungi is your tissue level. Then we talk about the plant and then we talk about that Animalia. They have that organ level of classification. ठीक है, अब लिखो सेल. इवोल्यूशन भी टच हो गया और बायोकेमिस्ट्री भी, है ना. जीएस भी टच हो गया. That's true. I don't. What is cell? Big Daddy, what is cell? Cell is a basic structural and functional unit of life. Cell is a basic structural and functional unit of organism slash life and life slash organism, which is capable of independent existence and performing the essential function of life and performing the essential function of life. Who was the first discoverer of the cell? Very good. Next आंसर में लिखो. In 1665, Robert Hooke was first discovered the cell in a piece of cork
in the piece of cork, and also coined the term cell. And also coined the term cell. The word cell is derived from the Latin word. The word cell is derived from the Latin word that is cellula. Underline that. Cellula, which means compartment. Which means compartment. He published his findings. He published his findings in his famous work. In his famous work named Micrographia. Named Micrographia. और इंडिया में क्या हो रहा था 1665 में? हिस्ट्री छोड़ देती हूँ, वो साइंस से रिलेट नहीं कर रही है. माइक्रोग्राफिया. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, HOEK. Antony von Leeuwenhoek was the first person who observed the living cells, under a microscope, and named them animalcules. Animalcules means little animal. but आपको मतलब this is just a no, it's a interesting thing that Robert Hooke जब उन्होंने कॉर्क देखा तो कॉर्क इज अ लिविंग और डेड, तो उन्होंने सेल देखी थी क्या? बट कॉर्क तो बचा डेड ना, तो उसमें सेल थी क्या? उसमें बची थी सेल? नहीं ना. एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल वॉल देखा था, क्योंकि डेड अगर सपोज मैं अपने बोलूं उसमें सेल देखो, आप लोग देख लोगे सेल? नहीं ना. तो ही यूज्ड टू सी ओनली सेल वॉल. एक्चुअली में सेल की, क्योंकि रॉबर्ट हुक वाज उन्होंने बहुत सारा ऑलरेडी कर रखा था, ब्रिटेन के थे एक्चुअली वो, सो वी नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि ब्रिटेन में जो भी हो रहा है दैट्स ओनली द थिंग व्हिच विल बी कंसीडरेबल. तो वी नो दैट ना साइंटिस्ट कम्युनिटी में भी सारी चीजें होती हैं. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार आपका सेल देखा. ठीक है, इसीलिए सेल भी आज तक इसलिए बोलते हैं. ठीक है, जबकि अगर हम लोग इफ वी टॉक एक्चुअली व्हेन सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, सेलुलर मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपार्टमेंट? That's a division only. That means you are not saying that unicellular is a cell, because unicellular do not have any kind of compartment. Even if you talk about the within the cell, if you are talking about the compartment, then the prokaryotes do not have any compartment. Do they have? No, right? But उन्होंने उसमें डिस्कवर कर लिया था. एक्चुअली इसका मतलब एनिमल क्यूल्स होना चाहिए, नहीं लगता आपको? बिकॉज दैट्स एनिमल. एक्चुअली एनिमल क्यूल भी नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि सिर्फ एनिमल्स के पास सेल नहीं है, प्लांट्स के पास भी सेल है. ठीक है, चलो राइट ऑन. Next, on the basis of the number of cells, which forms the organism slash life, living organism can be of two types. Living organism can be classified into two types. Unicellular and multicellular.
Anushka, what is unicellular? Define the unicellular. Shivam, define the unicellular. Single organism. In the within the single cell. ठीक है? Much more clarified definition. Write down unicellular. Jyoti, you're typing something. Single cell which is capable of all essential functions for living. Yes, exactly. Correct. ठीक है? चलो. Write down. Unicellular. Those organism. I was yes, I got it. That's why I have stopped. I was stopped. I got it. Thank you. Those organism in which all the required function of the body, survival, and growth. Okay, slow करते हैं speed. Okay, and growth performed within the single cell. आप लोग के लिए भी speed तेज है, अभी तो आदत पड़ गई आप लोगों की ना. Performed within the single cell as a unicellular. Example, tell me some examples. Bacteria, protistas, right? Write down. Such as bacteria. किसी भी बैक्टीरिया के नाम भी लिख सकते हो. Bacteria, protistas. Algae होते हैं unicellular. Algae comes into your plant. तो algae होते हैं unicellular. नहीं. Can any algae can be unicellular? सोचो. Rohit, name some algae if they are unicellular. First of all, tell me unicellular algae can be or not. Yes or no? होते हैं? Exception में है. अच्छा. Chlamydomonas, volvox, है ना? Volvox used to live in a group, है ना? That's a colony. But Chlamydomonas is one of that. Chlamydomonas is one of that algae in which most of that nucleus-related researches have been done on them. ठीक है? Write down. Bacteria, protista. Protista, an example. Tell me. The Paramecium, Euglena, right? So many. Amoeba, yes, that's amoeba and the protistas. Write down unicellular algae such as Chlamydomonas. Unicellular algae such as Chlamydomonas, etc. Fungi होते हैं. Fungi can be the unicellular. तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इसके बाद हमने रखा फंजाई. तो टेल मी फंजाई इज द यूकैरियोट और द प्रोकैरियोट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन में पढ़ाना चाहिए मुझे लगता है. Eukaryotes, obviously, prokaryotes are the bacteria only. So listen this terminology, this statement very clear. Yes, good, Rohit. All the protistas, all the moneras, ये दोनों आप word interchangeably use कर लेना. But this is a kingdom, this is a cell type. That's the only difference. All the bacteria are the prokaryotes. All the bacteria comes under the monera. All the prokaryotic cells comes only and only under the monera. Prokaryote का class यहीं पे ही खत्म हो जाता है. And after that, when we grow,
We all are become eukaryotes. Either it's a paramecium, either it's a euglena, either it's a fungi. That means if you see the cell of these, it will be this one, it will not be this one. ठीक है? सिर्फ bacteria are the prokaryotes only. Either the cyanobacteria, either the PPLO, either the archibacteria, either the eubacteria. अगर बैक्टीरिया है तो वो यही होगा. बैक्टीरिया कैन नॉट बी प्लेस्ड हियर. गॉट इट? ठीक है. तो प्रोटिस्टा में आपके सारे यूनिसेल्युलर, इस सेल के बाद ये कॉम्प्लिकेट हुई, ऑल द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स कम्स अंडर द, देन when this cell become form the group like structure, ठीक है, then they combinedly called as, they do not have that organ level classification, ठीक है, but they do have that fungi, ठीक है. Now this is my question. I am telling you that some of the fungi are the unicellular, ठीक है, यूनिसेल्युलर भी हैं और क्या हैं, यूकैरियोट्स भी हैं. Got it? Then why this unicellular eukaryote, which are exception, have not placed in here? ये भी तो यूनिसेल्युलर है, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, सॉरी यूकैरियोट्स हैं. Then why this, suppose that ABC नाम है इस particular fungi का, so this ABC fungi, why it has not been placed in here? Why it has been placed in fungi? Very good, Anushka. What is the difference between all the cell wall? What is the difference of cell wall? Yes, cell wall is the feature. That's absolutely correct. But what is the difference of the cell wall? They have that chitinous cell wall. That's a difference. यहाँ पे हम लोग इसको किससे connect करते हैं? Lichen से. What is the lichen? Association of algae and fungi. What is the function of the fungi in the which kind of association it is? Symbiotic. ठीक है? Mutualism. Okay. So what the algae do? What the fungi do in that lichen? Food. And fungi also do one thing, because it has a very hard shell wall, है ना, बहुत टफ होती है. इसकी तो आपकी कैसी होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है जनरली, ठीक है. So fungi do have that hard covering of cell wall, that is your chitin. तो chitin, fungi, lichen, और हमने कहा सुना ecological succession में the first species grow, that is your lichen. Why the lichen grow? Why the algae cannot grow? Why the lichen can grow in that first area of the ecological succession? Why that algae cannot grow only? Yes, and here तो खाना तो algae ही बना रहा है, fungi क्या कर रहा है, protection भी दे रहा है, plus rock is a very hard surface. So from there the phosphorus, nutrition, whatever the available nutritions are there, because of its hard chitinous wall, ठीक है, वो क्या करती है, मिनरल्स और प्रोटीन्स अब्सॉर्ब कर पाते हैं, बिकॉज एल्गी की जो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट दैट मच टफ और नॉट दैट मच हार्ड इनफ टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन. इट कैन कन्वर्ट द सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कार्बो बना लेगी, है ना, फूड बना लेगी, बट फूड के लिए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो आपका फंजाई अब्सॉर्ब करती है, ठीक है. दैट इज व्हाई फंजाई आल्सो हैव दैट एसोसिएशन ऑफ द माइकोराइजा. व्हाट इज माइकोराइजा? Yes, very good. Fungi plus that root nodules of higher plants. Generally आपके जिम्नोस्पर्म में भी तो साइकस, साइकस की रूट में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. Some of the root has that kind of structure. इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा. सेम फंक्शन. Fungi plus roots of mycorrhiza. Cycas of pinus कहाँ ग्रो होते हैं? Pinus में भी होता है. Generally they grow in a little bit, hard, temperate. वहाँ पे आपके सॉइल में न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं. So इनकी roots are not that, मतलब होती तो है, अच्छी खासी root development होता है. So that fungi are associated with the roots of these kind of plants to absorb that more nutrition from that soil or the structure. ठीक है. Fungi का कहीं भी होगा इसका specification because of its cell wall. इसीलिए यूपीएससी को स्पेसिफिक ऑब्सेशन है सेल वॉल से बायोलॉजी में, ठीक है. सेल वॉल पे यूपीएससी ने एटलीस्ट 2017-18 के बाद 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, बस इसी आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन उस पे, ठीक है. राइट डाउन.
कल एक क्लास लूंगी मैं साइंस टेक की, लाइव करूंगी। अगर जिसको ये आ रहा है छोटेकर का कोई भी डाउट है वो देख, वो ओपन होगी क्लास, एक बार आप लोग देख लेना अगर चाहे, ठीक है। राइट ऑन। नहीं नहीं, मैं नॉर्मल मॉर्निंग टाइम में लूंगी। अगर आप यूट्यूब पे अवेलेबल होगी वो, मैं लाइव करवा रही हूँ उसको क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा था डिमांड। तो अगर आप चाहो तो 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे और 1 घंटे लगभग 20 मिनट की क्लास होगी। सो इफ यू वांट यू कैन सी इन दैट इन यूट्यूब आल्सो, ठीक है। चलो राइट ऑन। यूनिसेलुलर लिखा। नेक्स्ट मेक दैट इन मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, those organism those organism in which all the function of life, growth, survival is dependent on a specific and different cell organelle, dependent different and specific cell organelle, full stop. That is a cell consist of that is a cell consisting of specific cell organelles with specific function, with particular and specific functions. Multicellular organism further classified into two groups. One is tissue based, the second one is, ऐसे पेज को ऐसे ऐसे बाइफर्केट करके लिख लो, बेटर होगा। टिश्यू बेस्ड एंड ऑर्गन बेस्ड। टिश्यू बेस्ड में लिखो the group of similar type of cells come together and perform a specific function functions. Example, poriference. Organ based, when different kinds of tissues perform various different functions in the body and called them as organ based. These are more complicated, these are more complex organism. Next point, on the basis of internal architecture or the complications of the cell, or the complexity, not the complication, or the complexity of the cell, organism can further be classified or divided into two major groups. एक टाइप का क्या हो गया था ये, अभी दूसरा वन टाइप इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप, ठीक है। अभी आपका क्या हो गया, प्रोकैरियोट, एक साइड में लिखो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में लिखो generally smaller in size
कितनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना? 0.2 to 2 micrometer in diameter. Eukaryotic cells are both smaller and larger. Smaller and larger. Larger के साथ ब्रैकेट में लिखना. 10 to 100 micrometers. नेक्स्ट और क्या डिफरेंस होते हैं? गुड, लेट नो. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. उसमें लिखो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. नेक्स्ट, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ. सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोट्स में. सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. और किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडोग्लाइकन इज योर, क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कॉमा पेप्टाइडोग्लाइकन. I don't. Cell wall generally present. Cell wall is composed of. Cell wall is composed of cellulose. Cellulose plants and chitin. And chitin fungi. Cell wall is absent in animals. इसकी पहले जो लिखा है ना न्यूक्लियस है ना, उसमें एक वर्ड ऐड कर दो, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. जस्ट ऐड द वर्ड ट्रू. नेक्स्ट फिर लिखो डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स. डीएनए is not associated with the histone proteins. में लिखो यूकेरियोट्स में DNA is completely wrapped around the histone proteins. DNA is completely wrapped around the histone proteins. What is the function of the histone proteins? पैकेजिंग. तो इसमें नहीं होती है, फिर कैसे होती होगी इसकी पैकेजिंग? होने की जरूरत है? नहीं जरूरत है. क्रोमोसोम्स होते हैं बैक्टीरियास में, कभी सुना है? The DNA is packaged in the form of chromatin. The condensed form of the chromatin is your chromosome. So DNA is the chromosome. Can we say that? Yes. The nucleosome is structure. Nucleosome पे आपका short note आ रखा है. That is the chromosome only ना, होती है इसमें. The histone protein is a very complicated level of protein. इसमें आपकी NAP आ जाती है. It's very important in your वहाँ पे आपके काम आएगी ये. Replication. Right on. इसमें लिख लो. But presence of NAP. But presence of, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमेटिन प्रोटीन्स या न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. NAP ब्रैकेट में न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. प्रोकैरियोट्स में लिखो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. उसमें लिख लो प्रेजेंट. यूकेरियोट्स में लिख लो प्रेजेंट, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म,
sorry, chloroplast, lysosomes, etc. Next, ribosomes are smaller in size. Ribosomes, प्रोकैरियोट्स में लिखो, are smaller in size. किस टाइप का होता है? 70s. S क्या होती है यहाँ पे? Fedberg unit. Yes. Ribosomes are smaller types. बैक में लिखो 50s, sorry, 70s. तो राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ लाइक दिस ना. ट्रांसलेशन में जब लोग बात करते हैं तो आरएनए पे आपकी बिग यूनिट और स्मॉल यूनिट आके आरएनए को अटैच करती है. सो दैट मींस अ सिंगल यूनिट ऑफ आरएनए इज मेड अप ऑफ टू. सो यस, दो यूनिट्स, दैट इज 50s एंड 30s. ठीक है. इसमें भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होते हैं 18, 5.8, 5 पॉइंट. इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसमें करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में. राइट नो 70s की ब्रैकेट में 50 एंड 30s. ठीक है. उसमें लिखो राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज. राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज. कौन सा टाइप होता है इसमें? 80s. गुड. ब्रैकेट में 60s एंड 40s. टू सब यूनिट्स आर 60s एंड 40s. जब सिंपल राइबोसोम आपका वर्ड लिखा हो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में, तो आप सब कुछ लिखते हो फिर. स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, फंक्शन ऑफ राइबोसोम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स आर फ्रीली distributed in the cytoplasm. Ribosomes are freely distributed in the cytoplasm. यूकैरियोट्स में लिखो ribosomes freely present distributed in the cytoplasm and also associated with the cell organelle and also associated with other cell organelle. Which organelle? rough endoplasmic reticulum. Yes. और गोल्गी पे नहीं होता, राइबोसोम गोल्गी पे नहीं होता. और किसी से है एसोसिएटेड राइबोसोम्स? हाँ. Yes, Rohit, you're typing something. Ribosomes except the ER is associated with any other cell organelle. First, yes or no. If no, then fine. If yes, then who, what? What is the semi-autonomous cell organelle in the cell? The nucleus is complete. Nucleus called the master of the cell organelle. Then there are other cell organelles too. Mitochondria and chloroplast. So why they are called the semi-autonomous? Yes. So they do have their genetic material too. But जैसे कि सपोज कि आपका एक यूकैरियोटिक सेल है, तो जो मेन आपका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द, जैसे कि ड्यूरिंग दैट फर्टिलाइजेशन स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाता है ना. मदर का जो होता है पूरा ओवा होता है, बट मदर का माइटोकॉन्ड्रियाज भी जाते हैं. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रियल, अगर बेबी में माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. अगेन द टॉपिक इज योर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, है ना. ये तो टॉपिक है आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द माइटो, आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है दैट ऑल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड डिजीज, द स्टेटमेंट लिसन केयरफुली, पीवाई का क्वेश्चन है. इफ यू वांट आई कैन शो दैट आल्सो. all the mitochondrial related disease transferring from the mother, transferring in the offspring or the next generation from the mother only. Is that a correct statement? PYQ prelims statement, all the
चलो आंसर मी, जूलॉजी के साथ साथ प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? Yeah, this is a PYQ. You can see 2 times आ चुका माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन. रोहित, ट्रू और फॉल्स? शिवम, ट्रू? क्यों ये वाला ट्रिक नहीं लगाओगे? ओनली, ऑल, ऑलवेज स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं. स्ट्रीम स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग. ये भी हो सकते हैं. साइंस है, सही हो सकता है, ये सही है. कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, अभी जस्ट आई हैव सेड दैट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म व्हेन स्पर्म एंड एक्टिवेशन, ये सब हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी में है. सो एवरी सिंगल पार्ट लेफ्ट बिहाइंड, ओनली द न्यूक्लियस एंटर इनटू दैट. इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, आप लोगों के सिलेबस में पीवाईक्यू में क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ठीक है, तो हम लोग इसमें बात क्या करते हैं? स्पर्म को जो स्ट्रक्चर दैट इज द हेड, उसमें क्या होता है आपका? गोल्जी बॉडीज. फिर होता है नेक पोर्शन, नेक में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी टू द फैसिलिटेशन ऑफ टेल. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ये सारा पोर्शन, ये तो पेनिट्रेशन में डिसॉल्व हो जाता है, फिर ये आपका बाहर छूट जाता है और सिर्फ क्या एंटर करता है? दैट पोर्शन ऑफ द स्पर्म एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस. सो जब बेबी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ से जाइगोट बन रहा है, तो इसकी ही तो माइटोकॉन्ड्रिया जा रही है, स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाती. नॉट एट ऑल. ओनली वर्ड इज करेक्ट. इफ इट इज साउंड, इफ इट इज अ साइंस एंड यू नीड द, यू नो द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट इज करेक्ट. ठीक है, ओनली फादर. माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पे आपकी यूपीएससी ने 2 से 3 बार क्वेश्चन, डोंट नो, कोई बात नहीं, दैट्स करेक्ट. ठीक है, ट्रू है ये. पीवाईक्यू का आपका क्वेश्चन है ये, 2020 के बाद का क्वेश्चन, इट्स नॉट इवन वेरी ओल्ड. ठीक है, चलो. नहीं, क्या लिखा हमने? हाँ, तो आपका एसोसिएटेड विद द अदर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, बिकॉज राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन फॉर्मेशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया को कंटीन्यूअस, वो हर बार जाके उस पे नहीं डिपेंड हो सकती ना, न्यूक्लियस पे जाके हर बार डिपेंड नहीं हो सकती. एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी, इवन द रेप्लिकेशन आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी. ठीक है, तो उसको अपनी प्रोटीन, बट नॉट ऑल द प्रोटीन इट कैन फॉर्म. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स को उसको जरूरत पड़ती है जाने की. नेक्स्ट, आई डोंट. साइटोस्केलेटन, नहीं ये तो गलत है. ठीक, इतना काफी है. नेक्स्ट, मिग डेडिंग सेल थ्योरी. नेक्स्ट, अच्छा एक और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो. ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ अकर इन द साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में लिखो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. The transcription and translation both occur in the cytoplasm. इसमें लिखो यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में क्या होता है? The site of the transcription is nucleus. ठीक है, write down. Transcription occur in the nucleus. Transcription occur in the nucleus. RNA फॉर्म होता है ना, फिर वो बाहर आता है. And translation occurs in the cytoplasm. And the translation occur in the cytoplasm. Next, pick the heading cell theory. Who has given the cell theory? Sheridan and yes, very good. I don't. Cell theory. In 1839, Sheridan and Swan in 1839, Sheridan and Swan led to the development of cell theory. Led to the development of cell theory or cell doctrine. Cell theory or cell doctrine. एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था. ठीक है, फुल स्टॉप. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या लगता है कौन सा बॉटनिस्ट होगा? हाँ, गुड, वो जूलॉजिस्ट था, श्वान. According to this theory, put that into inverted comma यहाँ से. According to this theory, bracket में inverted comma लिखो. All the living things are made up of cells. And cell is the basic structural and functional unit of life.
and cell is a basic structural and functional unit of life. Next. In 1855, in 1855, Rudolf Virchow, Rudolf Virchow proposed proposed an important extension of the cell theory. Proposed an important extension of cell theory. Important extension of cell theory that all living cells, all living cells arise from pre-existing cells, pre-existing cells. इसको इन्वर्टर में करूं, all living cells से start यहाँ पे करूं, pre-living cells, that is omnis cellula acellula. That is omnis cellula acellula. Full stop. इस particular omnis OMS, ठीक है, दिस पर्टिकुलर का मतलब ये होता है दैट ऑल सेल्स, ओमनिस मतलब ऑल, सेल्यूलर ए सेल्यूलर मतलब सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल, ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अंडरलाइन दैट, इसको अंडरलाइन कर लो. दिस सेल थ्योरी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर all cellular organisms, full stop. नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे? वायरस, ऑब्वियसली. नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स such as viruses do not obey cell theory, such as viruses do not obey this cell theory. Over the time the theory has evolved, over the time the theory has evolved, the modern cell theory includes the following components. The modern cell theory includes following components. All known living cells, first, following components, all known living cells, all known living cells are made up of one or more number of cells, are made up of one or more number of cells. Next, the cell is a structural and functional unit of life. The cell is structural and functional unit of life. Next, all cells arise from pre-existing cells by division. All cells arise from pre-existing cells by division. By division. Next, cell contains hereditary information. Cell contains hereditary information. Bracket में लिखो, in the form of the genetic material. In the form of genetic material. Bracket close. Hello.
in the form of the genetic material bracket close, which is passed from one cell to another, which is passed from cell to cell या one cell to another during the cell division, slash producing the daughter cells or producing the daughter cells. Next point, कितने हो गए? 3, 4, 4. Next, energy flow. Energy flow occurs within the cell, Next, the basic chemical composition is almost same in all the cells. ठीक है. Next, make the heading structure of the cell. तो आज हमने प्रिंस वाले बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करे, उसे याद रखना. ठीक है. आपके ऑब्वियसली आप लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए आपके. ठीक है. ये आपका वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस बैकग्राउंड से आएगा, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन इवोल्यूशन से आएगा, इकोलॉजी से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, है ना, आपका फाइलम से आएगा, दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी रॉन्ग. ठीक है. चलो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. लिख लिया. देखो, डन. बिकॉज वी आर फ्रॉम जूलॉजी, हम ये नहीं कवर करते. एक तो बच गया हमारा. ठीक है. अदरवाइज सेल वॉल एक अपने ही इसमें एक बहुत बड़ा एक म्यूकोपेप्टाइड है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, काइटिन है, सब. अगर आप बॉटनी ले रहे होते तो आपको सब कवर करना पड़ता है, बिकॉज सेल वॉल इज देयर. हमारे में सेल वॉल से कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. आई विल शो यू द पीवाईक्यूज, है ना. इस यूनिट को कवर करके विल शो द पीवाईक्यू.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एटलीस्ट आपके चार्ज, अगर हम लोग अगर काउंट करें सपोज दैट 2020 से, तो 2020 से 25 में देयर विल बी द मिनिमम 4 क्वेश्चन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस. ठीक है, जोलॉजी. नाउ मेक गेटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बात तो होती कहां पर है, फटाफट मिट हेडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द एग्जैक्ट डिफरेंस, permeability. Okay, fine. This is the second most, I would say. The first most is nahi. Biswa, what is the basic difference between the plasma membrane and the cell wall? Composition. The third most, the core difference. Because of all these, whatever you guys are telling, because of that particular difference is. ये आपके जूलॉजी में नहीं है बट प्रीलिम्स में है. ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस रोहित? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन animals, but plasma membrane is present in everyone. That's the outer layer, that's the cell wall. Cell wall से just start यहाँ पे कर देंगे, then we call it protoplasm. Bacteria में इसीलिए protoplasm है. Human do not have that protoplasm. Just start. Suppose that if I'll change the color, if I tell you this is your protoplasm, दिख रहा है? This all consists in your protoplasm. That is cell. Cell wall. Cell is equal to cell wall plus protoplasm. Then protoplasm is consisting your plasma membrane, and then we talk about that is the difference between the protoplasm and the cytoplasm. ठीक है, अगर हम cytoplasm की बात करेंगे तो look it very clearly. Cytoplasm start from here. समझ आया? So that is your outer one is your cell wall. The inner one is your plasma membrane. What is the difference between the cell wall and the plasma membrane? The core difference is this is the dead and this is the living. That is the core difference. ठीक है, हमेशा याद रखना, वो डेड होती है, ये लिविंग होती है. सो परमेबिलिटी, कॉम्पोजिशन, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग यू कैन पास द सब्सटेंस फ्रॉम द सेल वॉल, सॉरी फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज द प्लाज्मा? अच्छा चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग डाल दी. ओके, तो वी नो द टर्मिनोलॉजी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ टेल मी व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द, ये आपका आईएफएस का क्वेश्चन है. प्लाज्मा लेमा, हैव यू हर्ड अबाउट द प्लाज्मा लेमा? व्हाट इट इज ऑल ऑफ दिस सेम और दीज आर डिफरेंट? परमेबिलिटी नहीं बच्चों, डेड और लिविंग का डिफरेंस होता है. चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री और दे आर द सेम? अभी तक तो सेम पढ़ा है. Plasma membrane and cell membrane are the same and the plasma lemma is different. विश्व बताना है, ज्यादा से ज्यादा गलत हो रहा है, मैक्स टू मैक्स ये हो रहा है, बट वी नो दैट ना, सो मेनी छोटी छोटी थिंग्स वी आर क्लियरिंग इट, राइट? सो दैट्स अ काइंड ऑफ गुड थिंग, आई वुड से. These two are different or all these three are different? Okay, anyone else? कुछ और किसी को मॉडिफाई करना है? नहीं, actually all three are similar, same. I'll tell you where we can use it. सारे ही सेम है. ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, एक्चुअली द वर्ड इज मेम्ब्रेन. ठीक है, लेमा इज द वर्ड मीनिंग द मेम्ब्रेन. सो एक्चुअली इफ यू वांट टू से दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा लेमा इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. बीच में ये टर्म कॉइन किया गया था प्लाज्मा लेमा बिकॉज इन दैट ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल की जस्ट अंदर वाली लेयर थी तो उसको बोला गया लेमा. ओके, दिस इज समथिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर, बट एक्चुअली इट वाज सेल वॉल के अंदर ही थी ना, बीच में देखो just below the cell wall, that is the plasma membrane. तो वो थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा आर सिमिलर थिंग. That can also be called as a cell membrane, but cell membrane can also be utilized in where, suppose that if we talk about this is a cell, this is a mitochondria, this is a mitochondria, this is a nucleus. So आपका nucleus और mitochondria क्या है? These are the cell organelle, right? आप न्यूक्लियस को आप थोड़ा स्पेसिफिक करते हो बिकॉज दैट इज अ मास्टर ऑफ द समथिंग सेल और समथिंग लाइक दैट. आप न्यूक्लियस को अलग कर देते हो, इसलिए आप बोलते हो ठीक है दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज दिस एंड दिस इज दैट.
But if you get it that what is the difference between that prokaryote and the eukaryote, that is a cell organelle, है ना. अब आप इसको बोल दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, चल जाएगा. अब इसको बोल दो गोल्जी मेम्ब्रेन, चल जाएगा. बट एक्चुअली दीज आर द मेम्ब्रेन, मतलब एक्सटर्नल लेयर है आपकी किसकी, सेल की, सेल की, है ना. दीज आर द सेल ऑर्गेनल. तो यहाँ पे व्हेन वी आर यूजिंग दैट सेल ऑर्गेनल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, वी आर नॉट यूजिंग इन द सेंस ऑफ द कंप्लीट सेल, वी आर यूजिंग इट स्पेसिफिकली सेल ऑर्गेनल. गॉट इट. तो सेल मेम्ब्रेन आपका स्पेसिफिक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर कॉम्प्लेक्स, आप क्लोरोप्लास्ट की लेयर को आप क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन बोलोगे ना. क्लोरोप्लास्ट लेयर तो हमने सुनी नहीं है कहीं पे, ठीक है. ओके, नाउ टेल मी, देखो कभी कभी ना अगर मैं यहाँ पे सेल वॉल लिख देती ना, तो क्या पता आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. हो सकते हैं ना कंफ्यूज. व्हाट इज द डिफरेंस? वॉल इज द, दिस इज अ वॉल ना, दिस इज अ डेड, है ना. लेयर इज, मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिंग, जैसे सेमी पर में कहीं भी अगर मेम्ब्रेन वर्ड लिखा होगा, दैट इज व्हाई सेल वॉल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट. सेल मेम्ब्रेन इज, जब मैंने क्वेश्चन अर्लियर क्लासेस बैचेस में पूछे तो मैंने ये भी लिखा था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, मैम ये और ये सेम है और ये सेम, मे बी आप लोगों में कंफ्यूजन हो जाता. वॉल इज कंप्लीटली द डेड वर्ड, व्हाइल द मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली द लिविंग वर्ड. समझ आ गया? चलो रेडी हो? यस, आओ, पहले बताना था ना, बोलना था बीच में. क्यों हम प्रिपेयर करा, माउथ पार्ट्स और द लार्वास कल पक्का. अब आज ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट कर दिए. कल, कल 5 बजे तक के बाद रोहित, आज ऑनलाइन भी एक ही बच्चा है, ठीक है. कल अपन करेंगे वो वाला क्वेश्चन ध्यान से, चाहे कहीं कितने भी बीच में हो, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is also used interchangeably, it is also used interchangeably with another terms, with another terms, that is plasma lemma or cell membrane. There is plasma lemma and cell membrane. The term plasma lemma is given by, the term plasma lemma is given by J.Q. Plow, J.Q. Plow in 1931, Plowe in 1931. Next, it is a dynamic fluid structure. It is a dynamic fluid structure which forms the external boundary of the cell, which forms the external boundary of the cell. Full stop. It acts as, it acts as selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, and regulates the, and regulates the molecular traffic across the boundary, molecular traffic across the boundary. Full stop. It is a thin, it is a thin, elastic, elastic, semi-fluid, semi-fluid, living membrane, living membrane, which forms, which forms the outermost boundary. Can we say that outermost boundary of the cell? Can we say that? Can we say that outermost boundary of the cell? Can we say that? Yes, in animal cell कह सकते हैं या फिर cell नहीं बोल सकते. Outermost boundary is the cell wall. But अगर आप लिख रहे हो outermost boundary of the cell, then mention in an animal cell. Otherwise, write it down outermost boundary of the cytoplasm.
outermost boundary of the cytoplasm. In cell, which separate the intracellular environment of the cell, which separate the intracellular environment of the cell from the extracellular environment, and regulate the transportation of particles slash substances across it या through it, across लिख लो, across it. नेक्स्ट सामने की एक और पॉइंट लिख लो. द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय नेगेलियन. क्रेमर का नाम बहुत सुना है ना बायोलॉजी में. द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय सी नागेली and C. Kramer, C-R-A-M-E-R, C. Nageli and C. Kramer in 1931. Sorry, in 1855. My bad. 1931 में तो वो है. In 1855. Next, make the heading structure of plasma membrane. Structure of plasma membrane. Right on. This is a very important. Make the star or double star, something like that. This has been asked multiple times. Structure of the plasma membrane. Okay, right on. The plasma membrane is bilayered in a structure. The plasma membrane is bilayered in structure. Full stop. Chemical studies of human RBCs. Chemical studies of human RBCs enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. The possible structure of plasma membrane. Next stanza में लिखो. Under the electron microscope, plasma membrane appears as tripartite structure. जितनी पीडीएफ मिली है आपको ऑनलाइन, वो आप लोगों को चाहिए हार्ड कॉपी में या उसी से काम चल जाएगा पक्का? ऑनलाइन आपके पास एक्सेसिबिलिटी है पोर्टल पे, तो उसमें आप देखना पेपर 1 की बहुत सारी पीडीएफ अपलोड करी. अगर आप लोग ऑफलाइन ऑब्वियसली आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोगों को मिल जाएगी. कोई प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं, माउथ ऑर्गन आप लोगों को हार्ड कॉपी दे दूं? ठीक है कर दे. माउथ ऑर्गन शिवम हमने बोला था उसमें से करना है. माउथ ऑर्गन की नहीं दिखाया था मैंने, कभी बनाई नहीं है माउथ ऑर्गन की पीडीएफ. वो आपका कोड पास है क्योंकि बहुत लिमिटेड और सफिशिएंट अमाउंट में लिखा हुआ कोड पास में. अगर आपके पास यहाँ वाली बुक है तो आई टेल यू द पेज नंबर 2. ठीक है, तो फिर देख लेना. जनरली देखो जैसे कि व्हाट आई एम थिंकिंग, माउथ पार्ट आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया. दूंगी मैं आप लोगों को लार्वा. कल लार्वा का क्वेश्चन है, कल आते ही अनुष्का एक बार याद दिला देना. ठीक है, सो दैट आई लिमिट माई सेल्फ अप टू द 5. ठीक है, कल लार्वास ऑफ द ऑटोपुट का अपन क्वेश्चन करेंगे 5 बजे से. सो दैट इन दैट 10 मिनट ऑफ प्रैक्टिस यू विल हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं. रुक राइट ऑन. टाइप ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर consisting of
consisting of two parallel baselines, separated by a central light area, full stop. This morphology generally referred as railroad track. अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज I'll explain in that tomorrow class. ठीक है, रेल रोड ट्रैक, ऐसे ना रेल रोड कैसे दिखती है हमें, ये एक पटरी जा रही है और ये दूसरी पटरी जा रही है, तो if we'll see from that above, suppose that, तो हमें क्या दिखेगा, ये दोनों डार्क दिखेगा और इसके बीच में we will see the lighter one. Exact copy of that plasma membrane is seen in that electron microscope. ठीक है, we'll describe it tomorrow. It's a very important. अभी ये वाले जो चल रहे हैं ना वो बहुत important है, जैसे कि in your paper 1 there's a very large और very big difference in your unit wise. non coded coded 16 17 18 क्वेश्चंस हैं, इसमें ऐसा सच नहीं है, इसमें फिजियोलॉजी में भी आपके क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में भी आपके क्वेश्चन है. आई वाज जस्ट चेकिंग 2018 का पेपर, यू गाइस कैन आल्सो चेक. 2018 में बायोकेमिस्ट्री वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बायोकेमिस्ट्री इज अ गुड टॉपिक, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है. वाइल 2022 में बायोकेमिस्ट्री की टॉपिक से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए. समझ आई मेरी बात? सो दैट आई एम ट्राइंग टू से कि पेपर 2 में आपका जो क्वेश्चन डिवीजन है वो, ये बात सच है कि फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बट वैसे ओवरऑल आपके सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस एक यूनिट छोड़ के, वो जो कि आपकी है सिस्टमैटिक्स. ठीक है, सिस्टमैटिक्स से एक क्वेश्चन है जो कि ऐसे प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू.